Good afternoon, all. In the previous session, we guys were discussing about the binomial distribution. Is it? We defined what we mean by binomial experiment. When we can say that an experiment is a binomial experiment. Is it? We are good with that. We are quite good with the notation which we are going to use in the probability function in the distribution function of the binomial. We are going to use some of the notations like n, p, q, and x. Is it? The n represents the number of times we are going to repeat that particular trial. P means the probability of getting success. Q, probability of failure. And x, the number of times we are looking for the success out of n trials. Is it? So these are some of the notations related to binomial distribution, as well as what was the probability function distribution formula for the binomial, that is probability that x is going to take value small x, is combination of n with x, p raised to x, and q raised to n minus x. Is it? This was the formula for the binomial distribution. Okay. So now, first of all, quickly, let's have some of the examples related to binomial distribution. This is the first one. Before going for this mean and standard deviation related to binomial distribution, we must be good that mean of binomial distribution is given by n into p, standard deviation, that is square root of n into p into q. Is it? So if you're having a mean and standard deviation of one of the binomial distribution, mean is 5 and standard deviation is 2, then determine the distribution. When they're asking, if I'm asking the similar kind of question in the examination that determine the distribution, that means what? You're supposed to provide the formula. You're supposed to provide that distribution formula. NCX, P raised to X, Q raised to N minus X, is it? And to determine the binomial distribution, what we are in need of the values of N, P and Q. Here, they had provided us the value of mean as well as standard deviation. Is it? We are not having the value of N, we are not having the probability of success, probability of failure. So we will be determining the value of N, P and Q over here. And then we will able to give the distribution. So here mean is 5. Is it? It is provided in the question, mean is 5. So I can write like this, n into p is equals to 5. Standard deviation. What is the formula for the standard deviation? Standard deviation is always the positive square root of variance, and we know that the variance for the binomial is product of n, p and q. So standard deviation, we may denote like square root of n, p and q. That value is also provided, that is 2. So using that square root of n, p and q, we can identify the value of n, p and q, and p and q will stand for 4. And once we are having the value of n and p, here I'm having the value of n and p, even I'm having the value of n, p and q, n and p is 5, square root of n, p and q is 2, so n, p and q will give you the value 4. Now if we take the ratio of both that, easily we will able to identify the value of q. Q will be 4 by 5. Once we are having the value of q, we can determine p1. 1 minus q will lead us towards p. And then if you're having value of p, I may replace that value of p over here, and using this we can identify the value of n. So let's it's a kind of simple question. Just go through it. It is quite easy. What I'm doing, I'm just taking the ratio of both that informations. N and p will get cancelled out from that. Sorry, p and q will get cancelled out from that. So sorry, my mistake. And p will get cancelled out from that, and the value of q will be 4 by 5. Once we are having value of q, we will go for p, 1 minus q, that is 1 by 5. And using that information related to mean, we can easily determine the value of n. N is 25. Once we are having value of n, p and q, we may go for the distribution. The binomial distribution is nothing but NCX, P raised to X, and Q raised to N minus X. I'm just supposed to replace the value of N, P, and Q. And I'm supposed to provide the range for my discrete enumerable X.
Here, the range of my discrete random variable will be 0 to 25. Why? 25 मैंने कहाँ से fix किया? Based on the value of n. As I'm having the information now that the value of n is 25, that means I'm repeating the same trial for 25 times. Is it? So surely my random variable x can take value from 0 to 25. Is it? So kind of simple question. Let's move for the second one. I'm not going to explain this. Just go through it. Let me know whether you're comfortable with this or not. Just go through this. The mean and variance is provided. The mean is 8. Variance is 6. Now, in the earlier question that provided the standard deviation. Now I'm giving you the variance. Is it? Variance means n into p into q if we are talking about the binomial distribution. So you are having the value of n into p, you are having the value of n, p and q. Using both that, you can easily identify, you can easily determine the value of n, p as well as q. Is it? So the value of n, p and q is 3 by 4, n is 32, and p is 1 by 4. Is it? And just go through it. Are we good with this? Yes, sir. So once we are having the value of n, p and q, we may go for our distribution. This will be the distribution. And observe, here we are having one of the additional question over there. We are looking for the probability of x is having value greater or equal to. Now, we must be sure, before going for this question, we must be sure about the range of x. Here, x is my discrete probability, this discrete random variable, and the range for x is 0 to 32. Now, with this probability that x is greater or equal to means what? I'm looking for probability of x is having value 2 plus probability that x is having value 3 plus 4 plus 5 plus 6. कहाँ तक जाएंगे हम? Plus probability that x is having value 32. I'm looking for that. Now, if you count that, I need to deal with this particular formula for 30 times. We'll be having 30 terms like this, and for each and every term, I'm just supposed to replace the value of x over here in this formula. But instead of that, we may use the logic. We all know that probability that x is having value greater or equals to 2 is nothing but 1 minus probability that x is having value less 2. अगर वो सारी हमको पता है सारी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 रहती है, तो हम 2, 3, 4, 5 से 32 जाने की बजाय अगर मैं 0 और 1 वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूं, उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दूं, then I will be having the same, is it? I will having same probability, is it? So what I am doing, 1 minus probability of, I need to use the bracket over there, as x equals to 0 plus probability that x is having value 1. ये दो ही फाइंड करें, इसको ऐड कर दीजिए, 1 में से सबट्रैक्ट करने से जो भी वैल्यू मिलेगी, that will be ditto same with this. Both this will be same. Surely. Is it? Are we good with this? Let me show you the solution once again. This will be the kind of solution. Is it? बहुत ही आसान है. You are not supposed to write down this particular step. वो तो बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है. It's fine. It's totally fine. ऐसे मत लिखिए आप अगर ना चाहे तो. You may go like this. 1 minus. यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 लिखना है आपको. First of all, is it 32c0 is always 1. nc0 is always 1. So this is 1 by 4 raised to 0, that is 1. So 1 into 1, and 3 by 4 raised to 32 minus 0, that means 3 by 4 raised to 32. Plus x equals to 1, that means 32c1, that will be 32. 1 by 4 raised to 1, that is 1 by 4. And
P by 4 raised Sir, you are not audible. मीटिंग तो बंद हो चुकी थी. Am I audible? Hello. हाँ सर, ऑडिबल. कहाँ से बंद हो गया था? कब से बंद है?
3-4 मिनट कब से। से बंद है सर? माइक से बोला भी पर आपने सुना ही नहीं सर। हाँ, बहुत पढ़ा लिया सर आपने। Oh God. आज कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल issue 2 है। पे थे अपन। ठीक है, example 2 was okay. Let me explain this once again for you guys. Let me explain the third one. Example 2 बहुत simple सा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Let me explain the third one. પછી આવજો. Yeah. So let's stick with the third example. You guys carry on with that particular calculation of n p. Okay. All those who are attending online, just be with me. Now, let's deal with the third example. This is a screen दिख रही है ना? देख तू निशी. हाँ सर, आप विजिबल है। ठीक है चल. With the usual notation, find p for the binomial distribution if the value of n is 6 and one other information is that 9 times probability that x equals to 4 is also equals to probability that x equals to 2. Is it? So what we are looking for here, we are looking for a value of small p. What is small p? Small p is the probability of success in the binomial case. Is it? So the data we are having for this question is n equals to 6. That's all. But other data is that 9 times probability of getting 4 successes is equals to probability of getting 2 successes. Okay. Now mark this, both these notations are saying whether you are using p of x equals to 4 or you are simply writing p of 4. इन दोनों का मतलब सेम ही है. ठीक है. अगर आप ऐसा लिख रहे हो p of x equals to 4, ये पूरा लिख रहे हो या फिर इस तरीके से लिख रहे हो p of 4, इन दोनों का मतलब सेम ही है. Is it? So I'm using this notation. Now this is the data we are having and we are looking for the value of small p. Small p is the probability of success. So what we need to do once we are having that information that this is a binomial distribution, so we may use a distribution formula over here. So 9 times the distribution formula, we are good with the distribution formula for the binomial, that is ncx, p raised to x and q raised to n minus x. I'm just replacing the value of n over there. So for this particular p of 4, if I wish to write down p of 4, then it will be 64. n की वैल्यू 4 लेनी है, n की वैल्यू 6 लेनी है. For this particular term, I am supposed to take x equals to 4. Is it? So 64 p raised to 4 and q raised to 6 minus 4 मानी की 2. What is this? This is just the simplified version. This is just the distribution for p of 4. Similarly, on the other hand, on the other side, we are looking for p of 2. P of 2, probability that x is having value 2. So once again, we will be using that binomial distribution formula. 6c2, now I am replacing x as a 2 and n as a 6. P raised to 2 and q raised to 6 minus 2, that is 4. Is it? Now we are just supposed to simplify this. Value of 6c4 and 6c2 will be same because we are having one of the formula, that is ncr is always equals to ncn minus r. Is it? So both this will get cancelled from both the sides. It will be very, very simple. But we are having 9 times p raised to 4 q the square is equals to p square q raised to 4. Now we need to simplify this and we are looking for the value of p only. If you can identify q, then 1 minus q will be p. If you can directly identify p, then we are good with that. So क्या करेंगे? चलिए p square दोनों तरफ से निकाल दो एक बार. यहाँ पे रह जाएगा p square, q square दोनों तरफ से निकाल दो. Then here we will be having q square. So I am having 9 times p square is equals to q square. Is it? 9 times p square equals to q square. Now we need to convert one of them into other. Either we need to convert q into p or p into q. Is it? So we are looking for p. So I'm converting q into p. So I can write like this: 9 times p square is equals to 1 minus p the whole square. Because what is q? Q is nothing but 1 minus p. Is it? And solving this, using this 1 minus p the square, that you need to use that particular formula, a minus b the whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Quite simple kind of stuff will be there. And at the end of that, you can easily determine the value of p. Let me show you the whole solution. Let me show you the solution. Go through this.
By solving that 9 times p square equals to 1 minus p square, by solving that, you will be having one of the quadratic equation with you. One of the quadratic equation. Now we all know that for the quadratic equation, there will be two values, which is going to satisfy that equation. Now, if I'm looking to solve this particular equation, which is in terms of p, I'm having two different values of p. One of the value is minus half, and other value is 1 by 4. Now, straightforward, I am going to reject one of them. We will be rejecting one of them, and surely we will be rejecting that minus half. But when we are rejecting one of the value, one of the solution in a maths, we must have a strong reason. Is it? Why cannot take p equals to minus half? Why we can't take p equals to minus half? ये क्यों नहीं ले सकते हम? कोई बताएगा मुझे? निशी? निमित? ऊपर बजा भाई। जीटी फाइनल एग्जाम खत्म हुआ इसकी। चलिए, कौन बताएगा? निमित? वैल्यू माइनस नहीं लेते इसलिए अपन Sorry, once again, you are not audible to me. माइनस वैल्यू हम नहीं लेते इसीलिए किसके लिए माइनस वैल्यू नहीं लेते? कब मैंने बोला माइनस वैल्यू नहीं लेते? प्रोबेबिलिटी Yes. What is p? p is a probability, और probability की रेंज क्या होती है? 0 से 1. So 1 से अगर बड़ी है तो भी हम रिजेक्ट करेंगे, 0 से छोटी है तो भी रिजेक्ट करेंगे. Observe this leads to p equals to minus 0.5, which is not possible. So we are going to reject this, and we will accept that p equals to 1 by 4, मानी कि p की वैल्यू 0.25 है. And if in the question they are asking what will be the value of q, then q क्या होगा यहाँ पे? If p is 1 by 4, then q will be 3 by 4, is it? So it will be quite simple. Now since probability can't be negative, p will have the value 1 by 4, is it? Are we good? All those who are attending this will let me know on the chat box right now. All those who are attending this online. वाले एक बार फॉर्मूला बता दीजिए ना. Sorry, फिर से बोल एक बार. ये अपन ने सॉल्व किया ना p वाला ऊपर वाला, ये वाला? राइट हैंड साइड. हाँ, उसके नीचे जो है स्टेप, उसमें कौन सा फॉर्मूला आता है? Someone is asking how I had solved this particular. Is that? लाइक याद है, पढ़े थे बट करवा दूं. यहाँ पे रे मैं याद करवा दूं. Basic things related to quadratic equation. If a quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c, ये तू 10वीं में पढ़ी थी. This is the general form of quadratic equation. Each and every quadratic equation will have two roots. Might be same, might be different, might be real, might be imaginary. पर हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट रहते हैं. वो दोनों रूट आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है. वो क्या है? x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4 times ac divided by 2a. Is it? This is the formula. Using that particular formula, you can determine both the roots of any of the quadratic equation. Any of the quadratic equation. अगर तुझे याद है बेटा तो तू 10th में इसको डेल्टा बोलती थी. डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. Is it? Discriminant डेल्टा. और उसके ऊपर से तू डिसाइड करती थी if delta is equals to 0 then both the roots will be same. If delta is greater than 0 then both the roots will be real and different. And if delta is less than 0, अगर delta की वैल्यू नेगेटिव है then both the roots will be imaginary. Both the roots will be imaginary. तो ऐसा कुछ कंसेप्ट था, तो मैंने यहाँ पे वही किया. देख बेटा, देख ये जो मैंने तो पता चल गया सर, बस फॉर्मूला याद नहीं था मुझे. ठीक है, ये पूरी बात x के लिए थी, यहाँ पे वो इक्वेशन p के लिए है, तो ये p वाली फॉर्मूला बन गई सिर्फ. इज इट? भाई ये यहाँ पे देख, तू a b c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर. p स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट दैट इज 8 है, उसकी वैल्यू, p का कोएफिशिएंट दैट इज b दैट इज 2, and your constant term that is c that is -1. -1. So if you're going to compare both these now, then surely you will be able to understand. Is it? Are we good? Yes. Okay, let me move ahead. ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. Now let me give you one more. We're already done with this. I'm looking for one of the word problem. Yes, there it is.
Just read the instruction first. The incidence of corona in an industry is such that the worker have a 20% chance of suffering from it. किसी वर्कर को कोविड होगा उसका चांस कितना है? That is 20%. These are just the chances, is it? Chances बोले या फिर probability बोले, दोनों एक ही बात है. What is the probability that out of 6 workers chosen at random, 4 or more will suffer from the corona? Quite practical question, is it? Replace corona with the student, 6th semester AI Big Data students. यहाँ पे replace कर दिया अगर, then देखिए क्या इंफॉर्मेशन क्या है. 20% चांसेस है कि किसी भी वर्कर को कोरोना होगा, is it? अब हम 6 वर्कर्स, एक सैंपल ले रहे हैं, एक 6 लोग का ग्रुप चूज कर रहे हैं रैंडमली, एंड आउट ऑफ दैट 6 वी आर लुकिंग फॉर कि 4 या 4 से ज्यादा लोगों को कोरोना है, उसका चांसेस क्या है? व्हाट आर द चांसेस दैट 4 या 4 से ज्यादा लोगों को कोरोना है? अब मैं सैंपल 6 का ले रहा हूं, 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी दैट 4 वर्गों को कोरोना है या फिर 5 को है या फिर 6 को है. 6 से बड़ा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मेरा सैंपल ही 6 का है. इज इट? सो हियर वी नीड टू, देखिए कहीं पे नहीं लिखा हुआ, पहले तो देखिए पूरे इंस्ट्रक्शन में कहीं पे लिखा हुआ है कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है? लिखा हुआ है. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड बाइनोमियल? नो. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? इवन लिखा है कहीं पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? अभी तो बहुत आसान है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. यू गाइस आर क्वाइट गुड कि सर अभी जो आप एग्जांपल डिस्कस करोगे वो बाइनोमियल वाला ही होगा. बट जस्ट इमेजिन योर सिचुएशन इफ द सेम क्वेश्चन इज दैट इन द एग्जामिनेशन. Is it? So when we are dealing with examples of the running topic, तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान होगा. But you need to identify, you need to fit this particular into one of the suitable topic. जो हमने पढ़ा हुआ है ना, उसमें किसी एक टॉपिक में इसको घुसाना है. पहले तो हमको डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो सकता है. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में अप्लाई होता है? इफ एक्सपेरिमेंट इज बाइनोमियल. सर यहाँ पे क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट? कुछ नहीं लिखा हुआ. एक्सपेरिमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है. वी आर रैंडमली चूजिंग 6 वर्कर्स और उसमें कोरोना है या नहीं ये देख रहे. तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की कंडीशन, आउटकम 2 ही होने चाहिए, हाँ या ना, यस और नो, सक्सेस और फेलियर, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, लाइक दैट. इज इट ना? 2 ही आउटकम होने चाहिए. तो यहां पे मैं कोई भी वर्कर चूज करूंगा, या तो उसको कोरोना होगा या तो नहीं होगा. इज इट? या तो कोविड है या तो नहीं. सो सिर्फ 2 ही आउटकम है. हर एक की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट मैंने बोल के रखा है. देयर इज अ 20% चांस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द कोविड. इज इट? तो वो प्रोबेबिलिटी हर एक के लिए इंडिपेंडेंट है. अब कोई एक फर्स्ट वर्कर को कोविड है या नहीं, उसका अभी हम मान लेते हैं कि दूसरे के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है. सो ईच एंड एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट. हर बार प्रोबेबिलिटी सेम है. अब डिसाइड ये करना है कि हम सक्सेस किसके साथ घुसाएंगे, किसको सक्सेस बोलेंगे. किसी को कोविड आए उसको सक्सेस बोले या फिर कोविड ना आए उसको सक्सेस बोले. वी कैन डू एनी, वी कैन डिफाइन आवर P in any of the way. But अगर क्वेश्चन देखिए आप, what we are looking for 4 or more will suffer from corona. So we will be assigning probability that a randomly selected worker is affected from corona. That means a success for us. That will be considered as a success for us. अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, मुझे पता है ये सर, किसी को कोरोना आया, किसी को कोविड आया तो उसको सक्सेस थोड़ी बोलना चाहिए, ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं आप. पर
मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक स्लाइड में एक रेड फॉन्ट में एक लाइन शेयर की थी, अगर आपको याद हो तो. यू मे एसोसिएट सक्सेस विद एनी ऑफ दैम इन पॉजिटिव वे और इन द नेगेटिव वे. किसी भी के साथ आप सक्सेस को एसोसिएट कर सकते हो. तो यहां पे हम एसोसिएट करेंगे पी को गेटिंग अफेक्टेड विद द कोविड. तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से दी गई है. इफ पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द कोविड, तो उसका चांसेस है दैट इज 20%. नाउ 20% वी नीड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. 20% माने कि 0.2. Is it 20 divided by 100? That means 0.2 will be the value of P. Once we are having the value of P, Q तो आसानी से मिल गया. If P is 0.2, then Q will be 0.8. Is it? अब N की वैल्यू क्या लूंगा बताइए. How many workers we are? 6. Yes, we are looking for a group of 6. And X की range. X माने की नंबर ऑफ टाइम्स वी आर लुकिंग फॉर सक्सेस. अब यहाँ पे X की रेंज क्या होगी. 6 में से किसी को भी कोरोना नहीं है, 1 को है, 2 को है, 3, 4, 5 एंड मैक्सिमम 6. तो देखिए इतनी प्रैक्टिस, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद हमको पता चला कि भाई हाँ ये तो बायनोमियल में जा सकता है. गुड, वी आर गुड विद दैट. एंड वंस वी आर क्लियर अप विद दिस इंफॉर्मेशन, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बात खत्म भाई, कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर्मूला आपको पता है, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं. आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन, जस्ट गो थ्रू इट, लेट मी नो. देखिए एक बार, हर बार आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करके देना है कुछ आपके सॉल्यूशन में. इट इज डिफाइन ओवर दैट 6x 0.2 raised to x and 0.8 raised to 6 minus x, where x is having a range 0, 1, 2, 3, 5 to 6. Is it? Good. Now what we are looking for, we're looking for that 4 or more workers will suffer from corona. That means we are looking for probability that x is greater equal 4. 4 को आए तो भी गुड, 5 को आ रहा है तो भी हमको देखना है, 6 को आ रहा है तो भी देखना है. That means we are looking for p of x equals to 4 plus 5 plus 6. तो 3 बार वही सेम फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे जो कि ऊपर है. x को उसमें वेरी करेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार 5, एक बार 6. You will use your calc and add that 3 different values, and at the end you will have the value 0.017. Is it? Just go through it. Let me know whether you are good with this or not. Now go for this one, 6-1. Go for this one. Now, first of all, try to identify whether we can fit binomial distribution over here or not. Can we fit binomial distribution with this situation or not? If hands of certain grid lay x on 5 days on a week, an average.
मतलब कि 7 में से 5 दिन वो अंडा दे रही है, इज इट? अब हम यहीं से ही इस लाइन से ही पता चल गया कि कोई मुर्गी की बात हो रही है, वो अंडा या तो देगी या तो नहीं देगी, इज इट? सो देयर आर ओनली 2 आउटकम, या तो हाँ या तो ना। एग इज देयर और नॉट? सो यस, पहली कंडीशन तो लग रही है। फिर हर एक बार वो फिक्स ही है 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग विल बी 5/7 बिकॉज 7 में से 5 दिन वो दे रही है ऑन एन एवरेज, उसने बोल के रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, अगर मैं सक्सेस को बोल रहा हूं कि गेटिंग एन एग इज एन सक्सेस, देन दैट प्रोबेबिलिटी इज 5/7 व्हिच इज इंडिपेंडेंट फॉर ईच ट्रायल। तो यस, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग ए सीजन ऑफ 100 डेज, out of season of 100 days, how many days will that poultry keeper with 5 hands of this breed expect to receive at least 4 egg? अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, मैंने आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। देखिए, सीजन दिया हुआ है मैंने 100 दिनों का, एंड आउट ऑफ 5 hands receive at least 4 eggs। तो 3 और एक 3 नंबर्स है आपके पास, एक 100, एक 5, एंड वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 4x, एटलीस्ट 4x। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल n? Should I take x is equals to 100 and small n is equals to 100? What is n? What is n? In a binomial distribution, what we mean by n? The number of times we are repeating the experiment, is it? The number of times we are repeating the experiment. अब यहां पे experiment क्या है? क्या लग रहा है आपको? देखिए एक बार, 20 ले लूं, ये क्या? या तो 100 ले लो या तो 20 ले लो, क्या बोल रहे? 5 होगा, क्यों? बता, रीजन बता। Confusion is there. Am I supposed to take small n as 100 or 5? Now this question I'm throwing towards all the online students. You will drop your comment. पक्का? क्यों भाई, क्यों? हम 5 मुर्गी को देख रहे हैं, 5 में से 4, कम से कम 4 अंडा देनी चाहिए, हाँ या ना? तो क्वेश्चन इज लाइक दैट, आई एम लुकिंग फॉर 5 हैंड्स ओनली, इज इट? तो स्मॉल एन की वैल्यू 5 होगी, तो वो 100 को कहां पे घुसाऊंगा भाई? वो 100 डेज की सीजन का क्या मतलब है? इस इंफॉर्मेशन को कहां पे एसोसिएट करूंगा? x में डाल दूं, x इक्वल्स 100, n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 100। क्या बात है भाई दामेचा? n अगर 100 लूं तो जब p तू बात कर रहा है, p, व्हाट इज p? p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल। अब यहां पे तू p क्या बोल रहा है कि अंडा देगी मुर्गी, किसी एक रैंडम दिन पे वो अंडा दे रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/7, क्योंकि उसने बोल के रखा है कि एवरेज 5 दिनों में वो अंडा देती है वीक का, इज इट? तो उसका एक दिन में अंडा देने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 5/7, इज इट? 5/7 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर अ सिंगल डे, फॉर अ सिंगल हैंड। नाउ आई एम लुकिंग फॉर 5 हैंड्स ओनली, कि 5 में से 4, कम से कम 4 अंडे दे, 5 मुर्गी में से कम 4 मुर्गी अंडे दे। अब तू थोड़ा सोच, क्या मैं इनको 100 ले लूं? क्या ये सही होगा? देखिए, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है प्रोबेबिलिटी में। When we are dealing with a word problem, we need to determine, we need to examine each and every situation. Let me show you the solution. Wait, नहीं ना, नहीं ले सकता ना? ओके, सॉल्यूशन ना दिखाऊं, इतना दिखा दिया, चल अब એને જવાનું છે તારે શું છે? અરે એને લઈને જવાનું. આ ધામે છે ને, ઓકે ઓકે, એને બહાર મોકલવાનું છે. હા, અરે વાહ, એસએસઆઈપી માટે ના. તું જા. Now my question is that where I'm going to associate that capital N equals to 100.
कैपिटल N equals to 100. सोचिए थोड़ा. Binomial distribution, once we are having the value probability हम किसके साथ associate कर रहे हैं? P is the probability that of hand lying on egg on any day of a week. Average 5 दिन दे रही है, that means 5/7, that will be the probability of P, probability of success getting an egg. P की value है तो Q is 1 minus P, 2/7. And I'm examining only 5 hands. I'm dealing with a group of 5 hands, so N will be, small n will have the value of 5 only. I cannot take small n equals to 100, नहीं ले सकता, गलत है. अब यहां पे कैपिटल N मैंने क्यों लिखा हुआ है ये बाद में सोचेंगे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. I'm having P, I'm having Q, I'm having N, and we are quite sure this distribution is binomial distribution. So this will be the formula, this will be the formula. We need to determine the range of x. अब n की वैल्यू 5 है तो x रन होगा 0 से 5 तक ही. ज्यादा से ज्यादा 5 अंडे मिल सकते हैं. If I am examining a group of 5 hens, is it? उससे ज्यादा नहीं मिल सकते. Good. So when we are looking for at least 4 eggs, actually I am looking for x is greater equal 4. At least 4 मानी कि कम से कम 4 से ज्यादा तो ठीक है. 5 मुर्गी है तो 5 अंडे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिलेंगे. So it will be x equals to 4 plus x equals to 5. वही फॉर्मूला में एक बार x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 डाल के उसको ऐड कर दो, मिल जाएगा. बहुत आसान है. That is 0.5578. Now this will be not my answer. 0.555 will be not my answer. What is this? इसका मतलब ये हुआ कि 0.55, or in other words 55% chances are there that I'm going to select 5 hands randomly on a single day, and out of that 5 hands I'm getting at least 4x. एक दिन की बात हुई है, सिर्फ एक दिन की. एक दिन का chances क्या है? ये वाला chances है 55% chances. Or if I talk in terms of probability, then it is 0.55. So अगर मैं 100 दिनों की बात कर रहा हूं, if I'm talking about a season of 100 days, then I'm just supposed to multiply this number with 100. Simple, as simple as that. Go through it. Probability of receiving at least 4x on any day of week is 0.5578. Now we are interested to determine the same probability for the entire season, and that season, उस season के लिए हमको duration दिया हुआ है, that is 100 days. So what I am supposed to do? I am just supposed to multiply that probability with 100. Simple. And that will give me the number of days. So 55.78 days मानी कि I need to approximate when we are dealing with the number of days, number of person, number of cars, then we are always habituated to round it off with the nearest integer, is it? So 55.78 means approximately 56 days will be there out of that season, out of that 100-day season, that we will receive at least 4x. Are we good? Are we clear? My question is towards all the students who are attending online. Let me know whether we are good or not. Whether we are good or not. You're supposed to drop your comment on the chat box. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? All those who are attending this are requested to acknowledge on the chat box. Aman, Anand, Ashish, Chintan, Dhruv, Jeet, Kavan, Khushi, both the Khushi, Krinal, Krishna, Meet, Mohil, Murtaza, Nimit, Nishant, Parash, Parth, all 3 Parth, then after Pratyanshu, Purva, Rajat, all of you are requested to acknowledge on the chat box whether you are good with this or not. Are we good? Are we good? Okay. Good. So these are some of the these were some of the questions related to binomial distribution. Now I will include some other question in the assignment based on this binomial. 2-3 और question दूंगा binomial के, that will be in the assignment. So we're good up to this. In the next session we will continue with the next distribution, that is Poisson distribution. Okay, and, Poisson is just a kind of modification in the binomial. But वो क्या है?
वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. I will advise you once go through that particular Poisson, try to Google what do we mean by Poisson distribution, what is the relation between binomial and Poisson. If you can identify some of them, then it will be helpful for me in the beginning of next session. So let me stop my screen, let me stop my recording.